Viewers and listener, how are you today? Just fine. Today, dear viewers and listener, we are going to begin the presentation 15, Unit 5 and Level 2, page number 66. And the title of the presentation is Asking for and Giving Information about the Length, Width, Depth and Height. So in this activity, we will talk about the length of different places, the width of different places and the height of different places. Here also we see that one person asks question, how long is this river? The river picture is given. So how long is this river? It's about 9,035 miles long. And how many kilometer is that? It's about 1500 kilometer. The second question is, how deep is this canyon? It's about 2145 feet deep. And then again ask the question, how many meter is that? It's about 650 meter. And the third question is, how wide is this lake? It's about 1650 feet wide. And again the person asks, how many meter is that? It's about 500 meter. And the last question is, how high is this mountain? It's about 13,200 feet high. How many meter is that? So it's about 4,000 meter. So dear viewers and listeners, in this activity we will talk about how deep, how long, how deep, how wide and how high. How long mean कितना लंबा है कोई चीज़, लंबाई कितनी है किसी चीज़ का. How deep mean कितना गहरा है. एंड हाउ वाइड मीन कितना चौड़ा है, किसी कमरा हो, प्लेग्राउंड हो, कोई जगह हो, मैदान हो तो कितना चौड़ा है, वाइड. एंड हाउ हाई इज़ दिस माउंटेन. हाई मीन कितना ऊंचा है, राइट. ऊंचाई किसी की चीज़ की कितनी है, तो ऊंचाई हम दीवार की, पहाड़ की या ऐसे ही चीज़ों के बता सकते हैं. तो यहाँ पर हमने ये मैप खींचा है. सपोज दीज आर माउंटेन, दिस इज़ हिमालय, दिस इज़ फ्यूजी, एवरेस्ट, K2 एट्सेट्रा. And this is a river Panchkola. Suppose this one is river Panchkola or river Swat or Indus river, any name you can give to this river. And here the third picture is Jail Saiful Maluk है. तो इट्स a pool है और इट्स a lake है, राइट. तो जब हम किसी भी चीज़ के ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो वी विल आस्क अबाउट हाउ लॉन्ग. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ हाउ लॉन्ग इज़ दिस इन मीटर, हाउ लॉन्ग इज़ हिमालय, हिमालय कितना ऊंचा है, सो आप क्या कहेंगे, हाउ लॉन्ग इज़ हिमालय, इट्स 2737 मीटर हाई, मीटर हाई. और अगर मैं आपसे पूछ लो हाउ हाई इज़ माउंट फ्यूजी, 700 मीटर हाई, इतना मीटर बुलंदी है इसके. और अगर मैं आपसे पूछ लो हाउ हाई इज़ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की बुलंदी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 8,800 meter high. And how high is K2? 8,000 meter high. Suppose that is supposition may be not correct, this one. Similarly, this you see the map, that is a river, and the river is 2,000 kilometer long. It shows the length of this one, that this river goes in this way. And that shows the width, 200 meter is its width, तो इसकी चौड़ाई है. And this symbol shows the depth, गहराई. So 10 feet इसकी गहराई है. तो अगर मैं आपसे पूछ लो how deep is the Panchkola river, it's 10 feet deep. And how long is the Panchkola river? It's 2,000 kilometer long. And how wide is the Panchkola river? It's 200 meters.
गॉड इट्स 200 मीटर वाइड. कितना वाइड है? तो 200 मीटर वाइड है. Similarly, if we are talking about Saif al Malook, jail Saif al Malook, so you see the length is 1500 meter and the width is 800 meter and the depth is 200 meter. So अगर मैं आपसे पूछ लो how long is jail Saif al Malook? It's God, it's 1500 meter long है, लेंथ है ये इसका. And how wide is jail Saif al Malook? It's 800 meter wide. And how deep is jail Saif al Malook? It's 200 meter. God, it's 200 meter deep. Deep और depth इसके ये हैं. इसी तरह इनके लॉन्ग, ये तो एडजेक्टिव है, इसके नाउन लेंथ है. लॉन्ग मीन लंबा और लेंथ मीन लंबाई. डीप गहरा और डेप्थ गहराई. और वाइड चौड़ा और वेड्थ चौड़ाई. और हाई मीन ऊंचा और हाइट ऊंचाई. So we can also ask in this way, what's the depth of river Panchkola? River Panchkola की डेप्थ कितनी है? 10 मीटर. Shortly you can also say 10 मीटर. और अगर मैं आपसे कहूँ what's the height of Himalaya? हिमालय की बुलंदी कितनी है? Meter high. Good. And what's the height of Mount Fuji? It's 3,770. Good. And what's the height of Everest? It's 8,848 meter. And what's the height of K2? It's 8,000 मीटर हाई. गुड. और अगर मैं आपसे ये पूछ लो व्हाट्स द वेड्थ ऑफ रिवर पंचकोला, वेड्थ कितना है, इस चौड़ाई कितना है? सो 200 मीटर. अगर एट्स न भी कहे 200 मीटर. एंड व्हाट्स द लेंथ ऑफ रिवर पंचकोला? 2,000 किलोमीटर. एंड व्हाट्स द लेंथ ऑफ जेल Saif al Malook? It's 1,500. God. And what's the depth of jail Saif al Malook? It's 200. 200 meter. And what's the width of jail Saif al Malook? 800 meters. 800 meters. So in this way, dear viewers and listener, you can talk about how long is a place or how deep is a place, how wide is a place. जब आप लंबाई की बात करते हो तो you should use how long is this table, how long is this room. Similarly, when you are talking about depth, तो how deep is this well? ये कुआं कितना गहरा है? How deep is this valley? ये वादी कितना गहरा है? राइट. और जब आप वेट की बात करते हैं सो हाउ वाइड इज दिस क्लासरूम, हाउ वाइड इज दिस टेबल, हाउ वाइड इज दिस वाइट बोर्ड, इसकी वेट कितनी है? जो भी चीज़ हो, जब आप इसकी वेट मालूम करना चाहते हो. और जब आप हाइट मालूम करना चाहते हो सो हाउ हाई इज दिस वॉल, हाउ हाई इज दिस माउंटेन. तो जब आप किसी भी चीज़ की ऊंचाई मालूम करना चाहते हो तो हाउ हाई. एंड द सेकंड वे इज़ दैट व्हाट्स द डेप्थ ऑफ दिस वेल, व्हाट्स द डेप्थ ऑफ दिस पॉन्ड, व्हाट्स द डेप्थ ऑफ दिस रिवर, दिस ओशन. राइट. तो जिस भी चीज़ की आप डेप्थ मालूम करना चाहते हो तो यू शुड यूज. सिमिलरली व्हाट्स द हाइट ऑफ दिस वॉल, व्हाट्स द हाइट ऑफ दैट वैली, व्हाट्स द हाइट ऑफ दिस माउंटेन. एंड सिमिलरली व्हाट्स द लेंथ ऑफ दिस रिवर, how long is this river is equal to what's the length of this river. So in this way you should try to read this dialogue or this map again and again and try to learn about the length, depth, height and width of different thing. Dear viewers and listener, try to share the videos with your near and dear one and try to watch them regularly in a proper sequence. Thank you so much. Khuda Hafiz.